तो चलो लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्टली क्लियर था दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट and putting direct expenses on the debit and incomes on the credit, whatsoever expenses and incomes are still prevailing in trial balance are of indirect nature and they will appear where children in profit and loss account. Got it clear? So in today's lecture थोड़े से questions practice करेंगे PL के and then I'll probably teach you कि trading PL दोनों साथ में कैसे बनता है, because reality में साथ में बनता है, अलग अलग नहीं बनता। आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे पापा लिखने के। पापा मतलब पर्टिकुलर्स अमाउंट PAEA। चलिए, रेडी एवरीबडी? नेक्स्ट चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 7 इज विजिबल टू ऑल। चलिए, लेट्स हैव दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन वेरी क्विकली। पीपल आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन देयर कॉपीज। झटपट सारे बच्चे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट अपनी कॉपी में तुरंत बनाने चल रहे हैं। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बस दो बातें आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं। ऑल आइटम्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, putting expenses and incomes of direct nature there, the leftover ones represent indirect nature and it will appear where? In profit and loss account. चलिए, write on profit and loss account for the year ending 31st December 2001. Very quickly draw the format, children. Super quickly. So first and foremost, children, on the credit side, we'll be putting what? सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? By gross profit. Check out in the question. Do we have anything mentioned as gross profit? How much, children? So we'll be putting by gross profit transferred from trading account. Correct? What is the value of gross profit that we see in the question, children? 1,25,000. Correct? और देखिए, आपको कोई इनकम नजर आ रही है चिल्ड्रन? तो पहले क्रेडिट साइड कंप्लीट कर लें। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। वेरी गुड। Discount received, how much, children? 1,000. Very good. After discount received, what do we have? Interest received. Good. How much? 700. Very good. So gross profit हो गया, discount received written, interest received written. Any other income, children? Commission earned as good as other incomes. How much, children, commission earned? 2,000. Any confusion, any query? राय साहब, any query? असल में तरीका एक लाइन से लिखने का है ना, हबशी जानवर तो है नहीं। After that, children, any income that we see? Income from investments. Very good. What's the value? 1,500. चलिए. So people understood how did we put the income, children? सबको समझ में आ गया? चलिए.
Let's see on the debit side what expenses we can certainly write. सबसे पहले expense आपको क्या नजर आ रहा है? Discount. Paid is basically allowed. Value children. Very good. After that, what do we have? Salaries. How much is the amount of salary? 15,000. Basically, discount cannot be paid. Slang word है थोड़ा सा वो. Discount आप कैश में थोड़ा किसी को दोगे, मतलब कैश ट्रांजैक्शन में दिया जाएगा, पैसे गिन के थोड़ा दे दोगे उसको. कोई 10,000 का सामान आप 9,000 रुपए में किसी को बेच रहे हो तो आप उसे क्या कहोगे? नहीं, पहले पूरा 10 देना, फिर हम तुम्हें 1 वापस करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा. सो द टेक्स्ट इज रॉन्ग बेसिकली. चलिए, देन वी हैव चिल्ड्रन रेंट. डन. व्हाट्स द वैल्यू? 5,000. Next, children, after rent, what do we have? Interest paid. कितना नजर आ रहा है इंटरेस्ट पेड हमको? 500. Very good. After that, what do we have? Yes. Carriage outwards. How much? Next. Selling expenses. How much? Then that's all. Chaliye. So definitely, children, credit total sounds to be more. It is 1,25,000 plus 1,000 plus 700 plus 2,000 plus 1,500. So it is 1,30,200. And definitely same value will be on the debit also, because we write the excess value. So बच्चों, definite है आपको किस साइड पे shortage नजर आ रही है? Debit side पे. Very good. This shortage represents excess of income on the credit over expenses. तो जब भी आपकी इनकम बिजनेस में ज्यादा होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, you will have profit or you will suffer loss. आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सिंपल एज दैट. सो वील राइट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब होता है दैट दिस प्रॉफिट विल बी गिवन टू द बिजनेसमैन. उसकी मर्जी वो इसे घर लेके जाए, उसकी मर्जी वो इसको बिजनेस में छोड़ के जाए. तो इट इज 107,600. ये आएगी वैल्यू. चलो, क्योंकि डेबिट का टोटल हमारा था 15,000 प्लस 600 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 500. 22,600, 1,30,200 माइनस हो गया. यस, दिस इज द आंसर. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया? पक्का? बिलो द टोटल वी कैन ड्रॉ डबल लाइन. Below the total we can draw double line. चलो, समझ में आ गया सबको ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा? बस एक बात याद रखनी हमेशा, सॉरी, पीएल कैसे बनेगा. एक बात याद रखनी ऑलवेज, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग whatsoever expenses are remaining they will appear in PL. Whatsoever incomes are remaining they will appear in PL. एकदम simple as that. Any doubts? Many doubts? पक्का? तो किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. ये बच्चों, तो सबको समझ में आ गया कैसे बनता है पीएल? तो इसीलिए जब मैं फाइनल अकाउंट्स पढ़ाता हूं, हर बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट आप ठीक से पढ़ लीजिए. बिकॉज जब ट्रेडिंग बन गया, जितने एक्सपेंसेस अब ट्रेडिंग बनने के बाद लेफ्ट ओवर हैं, बच्चे कहेंगे सर कान का कैंसर हो गया, बहुत सुन चुके हैं इसको, दे ऑल विल अपीयर इन
PL debit, incomes will appear on the credit of PL. चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन, एवरीबॉडी कर लेंगे खुद से? चलिए लेट्स स्टार्ट। बनाइए झटपट अपनी क्लासवर्क कॉपी में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, वेरी क्विकली बच्चों, वेरी क्विकली। Everybody has drawn the format. First and foremost, on the credit side, people must have written by gross profit transferred from trading account. How much? 5,25,000. Then in the name of incomes, we see commission received, interest received, discount received. No other income sounds to appear here. Only 3 incomes, correct? And all other are expenses. लोगों ने इनकम लिख ली? पक्का? इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया है किसी से, तो इंटरेस्ट हम उसे देंगे कि लेंगे? विजय माल्या है क्या आप? कुछ लोग विजय माल्या बन गए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, लोन ही पूरी इनकम है बेसिकली। काफी देशों की सरकार विजय माल्या को ढूंढ रही है, रिश्तेदार मेरी क्लास में उनके हैं, सोचा इन्हीं पकड़ा दूं थाने में जाके। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम बोलने वाले। तो बच्चों इनकम लिख ली सबने क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस के नाम पे डेबिट साइड पे सबसे पहले आपने क्या लिखा? रेंट, देन सैलरी एंड वेजेस, चलिए गुड। डेप्रिसिएशन गुड, देन इंटरेस्ट ऑन लोन, देन बैड डेट्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भी तो लिखेंगे, लिखिए लिखिए झटपट लिखिए सब लोग। तो चिल्ड्रन लेट्स चेक। आपने क्रेडिट साइड में बाय जीपी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट फॉलोड बाय कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव लिखा होगा। डेबिट साइड सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस सब लिख दिया, फॉलोड बाय डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, बैड डेट, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, टैक्सेस। डेबिट शॉर्ट आ रहा होगा 389,300 का, एंड दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? नेट प्रॉफिट। सो ट्रेडिंग और पीएल में अगर मैं आपसे डिफरेंसेस पूछूं, पहला डिफरेंस तो यही आपको नजर आ रहा है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स डायरेक्ट आइटम्स एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स इनडायरेक्ट। There we get the answer as gross profit, here we get the answer as net profit, या gross loss और यहाँ पे net loss। सिमिलैरिटी बता सकते हैं आप मेरे को? अंग्रेजी आती है तो सिमिलैरिटी बता देंगे आप। क्या सिमिलैरिटी होती है ट्रेडिंग और पीएल में? इनकम और एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ दीजिए, इनकम और एक्सपेंस अपीयर इन बोथ द प्लेसेस। दूसरी सिमिलैरिटी, बोथ आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोथ आर अ पार्ट ऑफ। तीसरी सिमिलैरिटी सोचिए क्या होगी? सोचिए सोचिए सोचिए, बहुत अडेयर करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे तभी दे पाएंगे जवाब मेरे प्रश्नों का। अरे भाई दोनों में जीपी रिप्रेजेंट होता है, वहां पे आंसर आता है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सर ये मैं तो ये भी लिख दूंगा, दोनों में पर्टिकुलर अमाउंट आता है, तो पर्टिकुलरली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। गॉट इट? तो ज्यादा टीचर को बेवकूफ बनाने की जरूरत, इतना बनाओ जो एथिकल लगे थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग? सर दोनों में पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, सर दोनों हम ही बनाएंगे, ये भी सिमिलरिटी है, दोनों में 2 साइड होते हैं। समझ में आ गया? तो बेवकूफियां कम। चलिए, अंडरस्टूड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? सो लेट्स गेट डाउन टू प्रिपेयर हाउ टू हैव अ कंबाइंड ट्रेडिंग एंड पीएल। सर सब कुछ सेम लग रहा है, सिर्फ एक नई चीज नजर आ गई। ग्रॉस लॉस के आगे क्या लिखा था हमने? ट्रांसफर्ड टू पीएल, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं पूरे होशो आवाज में पढ़ा रहा हूं, नो शिवरात्रि इफेक्ट। और डेबिट साइड में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। जैसे नॉर्मली आप लेजर बैलेंस करते थे बच्चों, डेबिट शॉर्ट होता था तो क्या लिखते थे? टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्रेडिट शॉर्ट होता था तो क्या लिखते थे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस वर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड विद द टेक्स्ट डेबिट शॉर्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट शॉर्ट है तो ग्रॉस लॉस। तो अगर डेबिट शॉर्ट होता था वी यूज्ड टू राइट बैलेंस कैरेट डाउन, फिर टोटल के बाद क्या लिखते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कंबाइंड जब आप बनाएंगे चिल्ड्रन, here it is carried down before the total and here it will be what? Brought down. तो moral of the story is this, जो टेक्स्ट आपने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के आगे लिखा था ट्रांसफर टू पीएल, वो खत्म। ट्रांसफर टू पीएल विल नाउ बिकम व्हाट? कचौड़ी दमालू, कैरीड डाउन। एंड जहां पे हमने पीएल में बाय जीपी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग लिखते थे, अब क्या हो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद बीडी, ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया? So transferred to PL and transferred from trading gets replaced with carried down and brought down respectively. सबको बात समझ में आ गई?
बाकी ट्रेडिंग पीएल जैसे बनता था एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, कोई फर्क नहीं है। अंडरस्टूड दिस? लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन कंबाइंड ट्रेडिंग एंड पीएल एज वेल। सबको नजर आ रहा है बच्चों क्वेश्चन? पक्का? चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली। चिल्ड्रन ड्रॉ कर लीजिए व्हाट इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। एक कॉमन फॉर्मेट सब लोग बना लें। प्रिपेयर अ कॉमन फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल। Children, is the question visible to all on the left side? लेफ्ट पे क्वेश्चन सबको विजिबल है चिल्ड्रन? चलिए बच्चों लेट्स प्रिपेयर इट क्विकली। Now the heading will be written as trading and PL account for the year ending. What was the date in the question, children? 31st March 2002. Let's put the composition as particulars, amount, particulars, amount. Very quickly, children. चल सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको मेरी बात याद होगी। वी राइट 4 आइटम्स टेकन फॉर ग्रांटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एट फर्स्ट। डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न फॉलोड बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन वी राइट व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट तो आंसर आता है। गॉट इट क्लियर? जो बैरे की तरह क्लास में बैठते हैं वो गलत ही आंसर देंगे हमेशा। प्रॉफिट इज द आंसर। पांचवी चीज डायरेक्ट एक्सपेंस लिखनी है। तो चलिए लेट्स सी। वी हैव ओपनिंग स्टॉक चिल्ड्रन, परचेज एंड परचेज रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी है, सेल्स भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। चलिए इन वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। So debit side we'll be putting what is called as to opening stock. What's the value, children? Very good. Then children we have buy sales account. What's the value of sales? 3 lakhs. Thereafter we'll be subtracting sales return. How much is the amount of sales return? 5,000. It's 2,95,000. Debit side we write, children, purchases. What is the value given as purchase to us? 165. And children will be subtracting what is called as purchase return. Many a time children question आपको return inward outward लिख के देगा, तो you are not supposed to get confused. Return inward is sale return and outward is purchase return. क्या है purchase return की value? 10,000. So what is 1,65,000 minus 10,000? 155. And then we have closing stock. How much? 80,000. यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? चला पक्का? अब कंबाइंड में प्रॉब्लम उगती है उन बच्चों को जिन्होंने टाइम पे ट्रेडिंग अकाउंट का होमवर्क नहीं किया होता। व्हाई?
बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आप इतना समझ जाते हैं कि विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एंड विच आर इनडायरेक्ट। और उसके बाद जब आप पीएल बनाते हैं तो आपको यही पता लग गया कि भाई जो ट्रेडिंग में चले गए वो डायरेक्ट थे और जो नहीं गए वो इनडायरेक्ट। तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज अब क्वेश्चन में दोनों एक्सपेंसेस मिलेंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो लेट्स सर्च देम आउट चिल्ड्रन। कौन कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर के हैं? कैन वी से कैरेज आउटवर्ड एज डायरेक्ट? नो। वेजेस चिल्ड्रन? यस। पोस्टेज डायरेक्ट है बच्चों? पोस्टेज डायरेक्ट होगा? जिन्होंने ट्रेडिंग का होमवर्क किया वही बता पाएंगे, बाकी नहीं बता पाएंगे। डायरेक्ट होगा? वेरी गुड, चलिए एक्सेलेंट, इसको लिख के आइएगा, 11 साल पढ़ेंगे। सैलरी चिल्ड्रन? नो। पोस्टेज क्या होता है? पोस्टल स्टैम्प जो आप यूज करते हैं, तो आप कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, या अगर सप्लायर्स को भी ऑर्डर भेजेंगे, तो गुड्स के खरीदने से इससे कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड कोई आपका एक्सपेंस है? नो। स्टेशनरी इज डायरेक्ट एक्सपेंस? स्टेशनरी ऑफिस के पहले यूज होगी, ऑफिस के अंदर यूज होगी? ऑफिस के अंदर, तो कौन सा एक्सपेंस हुआ? इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट, बैड डेट्स? नॉट एट ऑल। बैड डेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस की कैटेगरी में जाता है। इंश्योरेंस डायरेक्ट है? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होता तो वी वुड हैव कंसीडर्ड इट एज डायरेक्ट, सिर्फ इंश्योरेंस है। तो चलिए सिर्फ आपको एक मिला, दैट इज वेजेस। लेट्स पुट वेजेस चिल्ड्रन। यहां पे आप लिख देंगे 2 वेजेस। हाउ मच? 30,000। चलिए, सो डेफिनेटली चिल्ड्रन आपको क्रेडिट साइड पे टोटल ज्यादा ही नजर आएगा। इट इज 295 प्लस 80 इज हाउ मच? 375। and debit side is children 1,55,000, 15,000 and 30,000. It's 2 lakh. So किस साइड पे शॉर्टेज महसूस हो रही है आपको? डेबिट साइड पे चिल्ड्रन शॉर्टेज महसूस हो रही है। So this debit shortage will be listed as what? Gross profit. But remember, अब आपको ट्रांसफर टू पीएल वगैरह नहीं लिखना। अब आप क्या लिखेंगे? कैरेट डाउन, और पीएल में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। वैल्यू इज 175। इसके बाद से लाइक वी यूज्ड टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट अर्लियर, we'll be preparing it in the same manner. No need to draw double line, marks कट जाएंगे, because trading PL is being prepared in combined form, तो account is not closed as yet. Got it? समझ में आ गया क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटी है? चलो, लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड। चलिए, डिफरेंस समझ में आ गया। पहले लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। पीएल में लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अब लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। चलिए, लेट्स सी कोई इनकम हमें नजर आए बच्चों। पोस्टेज कोई इनकम है? नो। डिस्काउंट रिसीव चिल्ड्रन? यस। और कोई इनकम आपको नजर आ रही है बच्चों? नो। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इनकम थोड़ा होगा। कैरेज आउटवर्ड इज सेलिंग एक्सपेंस, कोई भी और इनकम नहीं है, इट इज ओनली डिस्काउंट रिसीव्ड। सो क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे व्हाट? बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। वैल्यू चिल्ड्रन 5,000, and thereafter we have all items considered as expenses. Ready everybody? चलिए, सबसे पहला आइटम ऑफ एक्सपेंस आपको क्या नजर आ रहा है? टू पोस्टेज। वैल्यू चिल्ड्रन 3,000। वेरी गुड। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, पोस्टेज के बाद क्या है हमारे पास? बैड डेट्स। आफ्टर बैड डेट्स चिल्ड्रन व्हाट डू वी हैव?
कैरेज आउटवर्ड्स हाउ मच? तो बस ट्रेडिंग अकाउंट तक आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है. आफ्टर ट्रेडिंग प्रॉब्लम इज 0. After carriage children, what do we have? How much? After salary children? 2 stationery. How much? 2000. After that? How much? Then? Insurance is 4000. After that? That's it? चलिए. So बच्चों क्रेडिट साइड पे आपको टोटल नजर आएगा एंड दैट इज 1,80,000. और डेबिट साइड में आपको टोटल डेफिनेटली थोड़ा कम ही नजर आएगा. And here you can draw double line below the total. Yes, children. How much was the total? 1,80,000. Correct? चलिए. So 3 plus 1 is 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 20, 28 plus 2, 30. 30 plus 8, 38. 38 plus 4, 42. 180 में 42 गया तो कितना बचा? 138. And this 138 will be called as net profit transferred to capital account. So I hope so everybody well understood combined trading PL कैसे बनेगा. बट ये मत सोचिएगा कि सर 2 कलर में बनाना पड़ेगा क्या. क्विकली अपडेट चलो. चलिए. So understood how to prepare a combined trading and PL account children. चलिए. आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है? खतरे की घंटी नहीं है, वैसे ही रेड कलर में बन गया. ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन, लेफ्ट साइड इज डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट. आपको कुछ इनकम टैक्स, कैश इन हैंड और कैपिटल जैसा नजर आ रहा होगा. मैंने डेलिबरेटली इसको कलर किया है बिकॉज ये जो ब्लैक आइटम्स हैं दे डू नॉट हैव द इफेक्ट इन ट्रेडिंग एंड पीएल बिकॉज कैपिटल इज नॉट एन एक्सपेंस और इनकम. तो ये ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाएगा. तो कहां जाएगा? आप जानते हैं कहां जाएगा? बैलेंस शीट. हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद. बट वहां पे बैलेंस शीट बनाने का सोर्स अलग था, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने का सोर्स अलग है. कैश इन हैंड क्या होता है बच्चों? ये एक्सपेंस तो होता नहीं है, ये एसेट होता है. बट सर इनकम टैक्स तो एक्सपेंस है. दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर. इनकम टैक्स पे करने की जर्नल एंट्री आपको क्या पढ़ाई गई है बच्चों? इनकम टैक्स पे करने की जर्नल एंट्री किस जमाने में पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी? पढ़ी नहीं कभी आज तक? चलिए कोई बात नहीं, अगले जन्म में जवाब दें. पूछ लो क्या होती थी. कैश अकाउंट डेबिट करते थे इनकम टैक्स में. वाह, ये लोग हैं विजय माल्या खानदान के लोग. क्या होती थी एंट्री? चलिए, जो सो कॉल्ड बॉर्न इडियट्स एंड डोंकीज हैं, फॉर देम द एंट्री इज इनकम टैक्स टू कैश. फॉर एजुकेटेड पीपल इट इज ड्रॉइंग टू कैश. वेरी गुड अनुष्का जी. ड्राइंग्स टू. हाँ, पढ़े लिखे लोग तो सब बताएंगे ही बताएंगे. पढ़े लिखे लोग तो बताएंगे ही बताएंगे. मैं तो झाड़ू पोछे वालों की बात कर रहा था. चलिए कोई टेंशन की बात नहीं है. सब पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? पढ़ लिख के सब विदेश यात्रा चले गए, विदेश चले गए काम धंधा करने. इसलिए कुछ तो बुढ़ापे की लाठी भी बने ना. चलिए, समझ में आ गया. और जॉन भाई साहब का है ये. जॉन भाई साहब को जानते होंगे आप? नहीं जानते? चलिए, वो जॉनी था ना गद्दार. जैसे आप लोग गद्दार हैं. पेरेंट्स तो पैसे देते हैं पढ़ने के लिए, बट आप पढ़ते नहीं हो तो आप गद्दारी कर रहे हैं एक तरह से उनसे. तो आप भी अपना नाम जॉनी गद्दार रख सकते हैं. खैर, जिन्होंने आंसर दे दिया थम्स अप टू देम, और बाकी सबको ठेंगा. मिलेगा सबको एक ही चीज, किसी को थम्स अप, किसी को ठेंगा. तो लेट स्टार्ट चिल्ड्रन. बनाते हैं इसका ट्रेडिंग एंड पीएल. क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया गया है. बना लीजिए झटपट ट्रेडिंग पीएल अकाउंट वेरी क्विकली. आई विल आल्सो ड्रॉ बट इन मिनिएचर फॉर्म.
The heading would be trading and PL account for the year ending ... Particulars, amount, particulars, amount. ये जो आंसर नहीं बता पाते मेरे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जाननी जरूरी है. रीजन नंबर 1 जब पढ़ाया गया था तब भी नहीं पढ़ा. रीजन नंबर 2 रिवीजन ही नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, 90 का भी लोगों का आना चाहिए. सब पढ़ लेंगे तो सबका आ जाएगा. 90 की बेचारे की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी. 90 उदास हो जाएगा, और कहीं 90 उदास में आत्महत्या कर लिया ना तो उसकी आत्मा भटकेगी और आत्मा उल्टी भी हो जाती है तो 90-60 बन जाता है. क्विकली डू. Check out children trading account. On the debit side, we'll be putting first and foremost what is called as opening stock. The value is 60,000. Then on the debit side, we'll be putting purchases. The value is 540 less purchase return 12,000. What is 540 minus 12? 528. Credit side, we'll be putting children sales less sales return. So by sales, the value is 10 lakh 40,000 less sales return. It is 12 children. So the value would be 10 lakh 28,000. And then we'll be having closing stock 1 lakh 35,000. Thereafter, in the category of expenses, factory expenses would be written only. किसी ने trading expense तो लिख दिया गलती से. Carriage inward is given where? Okay, yes, sorry, forgot. To carriage inward. What is the amount of factory expense? 11,000. Carriage inward कितना है? 8,000. That's it. Credit total would be 1153, sorry. 1163 is the credit total. Debit total is children 528 plus 60, 588. Then it is 11 and 819, 6,07,000 and 1163 credit total tha. So the difference is 5,56,000. We'll be calling it as what? Gross profit carried down, and here we'll write by gross profit brought down. बस now the things are damn easy. अब बस आपको ये देखना है कौन कौन से इनकम्स और एक्सपेंसेस बचे. Those incomes which are left will appear in PL credit side, and those expenses which are left will appear on the debit side of PL. Understood everybody? चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. तो आपको इनकम के नाम पे बच्चों और क्या मिलेगा? डिस्काउंट रिसीव्ड एंड interest received. So we'll write by interest received, by discount received. The value is 3 and 6. And debit side, we write children salary and wages, office expense, trading expense, discount allowed and commission. How many items do we have? 5. सबसे पहले आप लिखेंगे salaries and wages. Minded children, अगर wages and salaries होगा, so we'll be putting it in trading. Salaries and wages होगा, so we'll be putting in PL. Thereafter, we have what is called as office expenses. How much? 4,000. Then we have trading expenses. It is 8,000.
Then we have children, discount allowed is 4,000, and at last we have commission. How much? 2,000. So credit is children 565 और डेबिट में कितना है जरा देख लें, 3,50,000 plus 4,000 plus 8,000 plus 4 and 2, 368. So debit is coming 368 and credit is 565. Which side sounds to be short, children? Debit with 197. So we'll call it as what? Net profit transferred to capital account. I hope so people will be able to do the totals. कर लेंगे पक्का? कोई डाउट चल रहा किसी को इसमें? तो नेट फिट लिख लीजिए फास्ट. चलिए. So somewhat homework is being assigned. आपको बच्चों ट्रेडिंग के कैलकुलेशंस जैसे मैंने पढ़ाए थे वैसे ही पीएल के होते हैं, बट वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ने में भी काफी टाइम है आपको, तो बिल्कुल परेशान मत होइए. होमवर्क मार्क कर लीजिए. चलन क्या करना है आपको होमवर्क में? जो होमवर्क दिया था 10 तक ये अगले लेक्चर में चेक होगा. क्वेश्चन नंबर 11 डीकेजी में सबको नजर आ रहा होगा. दिस इज टू बी डन एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क. इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं बच्चों? कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे इस क्वेश्चन में. व्हाट? कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल. क्वेश्चन में क्या लिखा है? लीस्ट बॉदर, आपको कंबाइंड ट्रेडिंग बनाना है. ट्रेडिंग पीएल मतलब तो 11th में ओनली पीएल, 12th में कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल. गॉट इट? नेक्स्ट आपको सो कॉल्ड इस सेट में बस इतना ही करना था. ये डीके गोयल है चिल्ड्रन, लास्ट में होगा एकदम. आ जाइए स्टार्टिंग में बच्चों. टीएसजी में क्वेश्चन नंबर 5 and 6 are to be done in homework. Only PL account is to be drawn. 5 and 6 only PL account is to be drawn. Marked? सिर्फ PL बनाना है. 5 and 6. ठीक. Thereafter children SC शर्मा वाले सेट में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप. ओनली PL विल बी ड्रॉन. ओनली PL लिखा है खैर क्वेश्चन में, नॉट टू वरी. लिख दिया. देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है? इसमें आप कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे. क्वेश्चन तो कुछ और बोल रहा है बट आप कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे. मार्क्ड? मार्क्ड. देन नथिंग एल्स इन दिस सेट. डीके गोल मार्क कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन संदीप गर्ग जी का असाइनमेंट मार्क करिए. 18th क्वेश्चन नजर आ रहा है? ओनली पीएल अकाउंट इन 18th. 19th 20th में भी ओनली पीएल अकाउंट. 18th 19th 20th 21st इन 4 में ओनली पीएल विल बी ड्रॉन बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट दिया है. अब ये क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा चीट करेंगे, बेवकूफ बनाएंगे. ये कुछ ट्रेडिंग अकाउंट वाले एक्सपेंसेस यहाँ डाल सकते हैं, तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेडिंग में जा चुका है. जैसे ट्रेडिंग बनाते तो कुछ पीएल वाले एक्सपेंसेस आते थे, डेप्रीसिएशन, कैरेज आउटवर्ड, तो डरना नहीं है. ठीक. 21 में यू आर सपोज टू प्रिपेयर व्हाट चिल्ड्रन? कंबाइंड ट्रेडिंग एंड पीएल. हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24 नजर आ रहा है? 24 नजर आ रहा है? क्या लिखा है? मतलब नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ पीएल बनाएंगे बस. 24th में ओनली पीएल. मार्क्ड. क्वेश्चन नंबर 25 कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल. 25 में चलन कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल. मार्क्ड एवरीबॉडी? सबने मार्क कर लिया? पक्का? कंफर्म? तो अगले लेक्चर में विद द ओल्ड होमवर्क दैट इज पेंडिंग एंड दिस होमवर्क विल बी चेक्ड, और हम आखिरी चीज पढ़ेंगे इसकी टाइटल एज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान है. वंस यू हैव प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग पीएल, अब ट्रायल बैलेंस में 3 चीजें रिमेनिंग बची. क्या क्या 3 चीजें? एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी विल अपीयर वेयर? सिंपल एज दैट. तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट मेन है. एक बार ट्रेडिंग बन गया आपका, आपकी समस्याएं नेग्लिजिबल हो जाती है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.